Okay, so in the first part of this week's lecture, we looked at digital modulation techniques, and we will just do a quick comparison, a worked example of a comparison between a simple and a complex digital modulation scheme, that is the binary phase shift keying BPSK and the 256 QAM. In order to understand the differences and the pros and the cons of both of the techniques. So we'll do that in our interactive session. But now it's time to move on to another important concept, which is that of multiplexing. Multiplexing is a technique that is used almost in any communication system, whether analog or digital. So let's have at that. So multiplexing or multiple access, these are very similar terms. They are used interchangeably. There is a little bit of difference between them, so we will also be discussing and clarifying the difference. But whether it is multiplexing or multiple access, they both refer to sharing of communication resources. Now the resources available to us are time and bandwidth or spectrum. These are the two communication resources available. And multiplexing, while it refers to the sharing of communication resources, a continuity of that definition is that it also refers to the process of combining multiple signals into one signal over a shared medium. So once again, the target of this combination is sharing of the resource. So if there is a channel or a medium available which has got a greater resource available, so we can combine multiple signals so that we are effectively utilizing the shared medium. Now multiplexing can be analog or digital depending on the type of signals which are being combined. If the signals are analog, it is analog multiplexing. If the signals are digital, it is digital multiplexing. Now when we compare multiplexing and multiple access, just to look at the similarities or differences, as I said earlier that they both generally refer to sharing of communication resources. So they are similar in that respect. While in multiplexing, the user requirements or the user plans for the use of the communication resource or its sharing, they are normally fixed and known. So the planning or the MUX already knows what are the requirements of every user, whereas in multiple access, the user's communication resource requirements can change. So there is a bit of dynamicism in multiple access. So because in multiplexing the user requirements are known, so the resource allocation can be done in advance. So there is a plan how to share the resource, and that planning is done even before the user requirements, because the user requirements are known. तो उसके मुताबिक एक sharing plan बन जाता है कि resource को किस तरह से divide करना है. Whereas in multiple access there is a dynamic allocation because it depends on the needs of at that time. So on the run उसकी allocation और planning होती है. पहले से नहीं पता कि किस user को कम्युनिकेशन रिसोर्स कितना चाहिए, तो उसी वक्त जो यूज़र्स कम्पीट कर रहे होते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए, उसी वक्त उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख के एक प्लान बना दिया जाता है एलोकेशन या शेयरिंग का. तो दैट्स अनदर डिफरेंस. एंड देन इन मल्टीप्लेक्सिंग द शेयरिंग इज़ लोकल. तो नॉर्मली मल्टीप्लेक्सिंग में जो सारे लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे एक ही जगह को लोकेटेड होते हैं फिजिकली, एक ही सिस्टम के अंदर या एक ही लोकेशन पे जो लोग हैं वो आपस में शेयर कर रहे होंगे रिसोर्स. Whereas in multiple access we are usually talking about remote sharing of resource. जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट को एक्सेस करना है. अब एक सैटेलाइट है वो स्पेस में है, उसको बहुत सारे अर्थ स्टेशन एक्सेस कर रहे होंगे मुख्तलिफ डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन से, और हर एक की शायद रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो. किसी ने HD TV करना है, किसी ने नॉर्मल डेफिनेशन वाला TV करना है, किसी ने शायद वीडियो सिग्नल करना ही नहीं है, डेटा भेजना है, किसी की ऑडियो सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी. So you see all of these requirements are different. They have different requirements for the communication resource, और ये need based है, कभी भी आ सकती है.
तो उस वजह से उसकी एलोकेशन उसी वक्त ऑन द रन की जाती है। तो इस किस्म के सिनारियोज जो है दैट फॉल्स अंडर मल्टीपल एक्सेस। तो ये डिफरेंसेस हैं मल्टीप्लेक्सिंग में और मल्टीपल एक्सेस में, जस्ट टू क्लैरिफाई। वरना दोनों का मकसद यही है, दोनों का काम यही है कि कम्युनिकेशन रिसोर्स को शेयर करवा रहे हैं बिटवीन यूज़र्स। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसकी एक एग्जांपल हमने कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी की थी, जहां हमने देखा था कि पल्सेस के दरमियान जब गैप हो, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की पल्सेस के दरमियान जब गैप हो, तो एक ही सिग्नल के पल्सेस या सैंपल के दरमियान जब गैप है तो उसमें हम दूसरे सिग्नल के सैंपल्स या पल्सेस इंसर्ट कर सकते हैं टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द टाइम रिसोर्स। ठीक है, सो दैट वाज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यही आइडिया बेसिकली, एज यू कैन सी, यू गॉट मल्टीपल इनपुट्स या मल्टीपल यूज़र्स एंड यू गॉट अ डिवाइस नोन एज मल्टीप्लेक्सर और मक्स। और उसका काम ये है कि जी वो हर एक का डेटा जो है वो बारी बारी वाया स्विच एक ख़ास प्री डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन के लिए वो इसके साथ कनेक्टेड है, फिर वो टाइम ड्यूरेशन के लिए इसके साथ कनेक्टेड है। तो होगा क्या, जो स्टार्टिंग फ्रेम जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी शेयरिंग की, उसके बाद अगर आप एक्स एक्सेस को टाइम समझें, टाइम एक्सेस, तो इतनी देर के लिए ये जो चैनल है इसकी एक्सेस इनपुट 1 को मिल जाएगी, तो उसका डेटा जाएगा इतनी देर के लिए, इसमें ट्रांसमिट होगा और रिसीव होगा। फिर जब ये टाइम इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर इनपुट 2 के साथ ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, तो वो सिग्नल उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका डेटा चैनल में से जाएगा। अब 1 के पास वो रिसोर्स नहीं है, 1 इज़ नॉट यूजिंग द चैनल राइट नाउ, सो 1 इज़ इन द वेट स्टेट, इट इज़ वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट। इसी तरह 2 को अपना एक टाइम स्लॉट एलोकेटेड है, 3 को, 4 को, सबको, ये जितनी भी इनपुट्स हैं, लेट्स से 8 इनपुट्स हैं, उनको सब अपना अपना टाइम स्लॉट एलोकेटेड है। उसके बाद स्टॉप फ्रेम है। तो वंस दिस सीक्वेंस इज़ कंप्लीट इट गोज़ बैक एंड देन वंस अगेन द स्लॉट ऑफ इनपुट 1 इज़ मेड अवेलेबल। तो हर थोड़ी देर के बाद उसे टाइम मिल जाएगा ट्रांसमिशन करने का। लेकिन ये जो टाइम शेयरिंग है ये इतनी तेज़ है कि उन यूज़र्स को पता भी नहीं चलता कि बीच में कोई इंटरप्शन या डिले आया। स्लाइड से डिले होता है ऑब्वियसली, द होल चैनल इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल द इनपुट्स फॉर ऑल द टाइम। हर एक इनपुट को चैनल अवेलेबल है फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन पूरी बैंडविड्थ अवेलेबल है चैनल की। ठीक है, सो द फुल चैनल इज़ अवेलेबल टू एवरी इनपुट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज़ द क्रक्स और द आइडिया ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को जिस तरह स्कलार ने एक्सप्लेन किया है, तो स्कलार बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हैं, टाइम और फ्रीक्वेंसी, वी कैन कंसिडर देम एज 2 एक्सीज। ये हमारे कम्युनिकेशन रिसोर्स हैं दोनों, तो वी कैन कंसिडर देम ऑन 2 एक्सीज। एक एक्सीज पे टाइम है, एक पे फ्रीक्वेंसी है। एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो हर एक यूज़र को एक टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। द होल ऑफ द बैंडविड्थ, सारी फ्रीक्वेंसीज जितनी अवेलेबल हैं वो सारी यूज़ कर सकता है, द फुल बैंडविड्थ, लेकिन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। फिर थोड़ा सा टाइम का गैप रख के, ताकि ओवरलैप ना हो जाए, थोड़ा सा गार्ड टाइम रख के, फिर उतना ही टाइम स्लॉट जो है वो सेकंड सिग्नल या सेकंड यूज़र को दिया जा रहा है। एंड देन आफ्टर गार्ड टाइम देयर इज़ द थर्ड यूज़र एंड सो ऑन। तो बेसिकली थोड़े थोड़े टाइम के लिए हर एक को चैनल की फुल एक्सेस दी जा रही है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जैसा आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, इट इज़ अ टिपिकल TDMA कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे जैसे सेटेलाइट है, इसने हर एक ग्राउंड टर्मिनल के साथ जो कि इसके फुटप्रिंट में आते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स जो हैं हर एक को असाइन किए हुए। तो इस टाइम स्लॉट में फॉर एग्जांपल इस ग्राउंड टर्मिनल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट में इसके साथ कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट में इसके साथ कर रहा है, फिर प्रोबेबली ये राउंड रिपीट होगा इस तरह। तो एवरी टर्मिनल इज़ गेटिंग एन एक्सेस टू द सैटेलाइट बैंडविड्थ फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फिर इट हैज़ टू वेट फॉर इट्स नेक्स्ट टाइम स्लॉट। So that is how the time division multiplexing or time division multiple access is implemented. Then we go on to frequency division multiplexing. उसका कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑडियो सिग्नल्स हैं 3 लोगों के। ऑडियो सिग्नल्स की नॉर्मली ये रेंज होती है अप टू 3.4 किलोहर्ट्ज़। तो इन तीनों सिग्नल्स के तो स्पेक्ट्रम एक ही बैंड का है। तो अब अगर 3 ऑडियो सिग्नल्स हमने ट्रांसमिट करने हैं,
तो what we can do is that we can shift their frequencies, ठीक है, by modulation to different bands within the audio band. 10 to 20 किलो हर्ट्ज़ के बैंड में हमने इनको मुख्तलिफ बैंड्स में शिफ्ट कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे आप इमेजिन करें एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, समझाने के लिए हमने इनको फ्रीक्वेंसी वाइज शिफ्ट कर दिया और फिर इन्हें हमने इस तरह उस जो जितनी भी बैंडविड्थ है चैनल की, लेट्स से 20 किलो हर्ट्ज़ तक की बैंडविड्थ है, 0 to 20 किलो हर्ट्ज़, तो हमने थोड़ा सा चंक एक सिग्नल को दे दिया, फिर गार्ड बैंड, थोड़ा सा सेपरेशन रखी, फिर दूसरे यूज़र का सिग्नल ऑडियो, फिर थोड़ा सा गार्ड बैंड और फिर तीसरे यूज़र का सिग्नल. तो अब हमने सेपरेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी वाइज कर दी. तो जितनी भी हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल है चैनल की, उसको हमने यूज़र्स में डिवाइड कर दिया विद गार्ड बैंड्स. तो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो यहाँ पे हम जो रिसोर्स जिसकी हम शेयरिंग कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. और स्कलार ने उसे जो एक्सप्लेन किया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को, वही ग्राफ एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस. तो उसने अब अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, अवेलेबल बैंडविड्थ को स्प्लिट कर दिया बिटवीन डिफरेंट यूज़र्स या डिफरेंट सिग्नल्स. एंड नाउ द होल चैनल बैंडविड्थ इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरी सिग्नल, बल्कि a portion of the channel, a portion of the bandwidth is available with guard bands, लेकिन for the whole of time. तो यहाँ पे अब टाइम बेसिस पे डिवीजन नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बेसिस पे डिवीजन है. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एज एक्सप्लेन्ड बाय स्कलार. So this is yet another example, a real life example of frequency division multiplexing. And as you can see, there are different audio channels with the spectrum of every audio channel ranging from 300 to 3400 hertz. So there are multiple audio channels, and by mixing with different carrier frequencies within the audio band, as you can see here, by mixing with different carrier frequencies, this audio signal is shifted to a portion of spectrum within 20 kilohertz band, but non-overlapping. As you can see, these three ranges, they are non-overlapping. There is a bit of guard band between each one of them, and once these audio signals are separated and the channel supports up to 20 kilohertz, so they can all be combined as shown here and sent simultaneously over the channel. So this is efficient utilization of the channel, of the resource. So the whole bandwidth, assuming that the bandwidth available is 20 kilohertz, so the whole channel bandwidth is utilized, all the signals are combined together and sent at a single time. So that is the basic concept of multiplexing, to utilize the communication resource efficiently and effectively. Then we move on to something very specific to fiber optics. Optical fiber communication also utilizes multiplexing, but that is called wavelength division multiplexing. And as you can see in the figure, the signals that are combined, they are of different wavelengths, so they are unique by their wavelengths, which also means they are unique by their frequencies. So this is wavelength division multiplexing. So they are combined together to be sent in a single fiber, and the colors are indicating different light colors. The light spectrum has different colors, so these indicate different colors, and every color has a different wavelength. So they are being combined. This is wavelength division multiplexing. A bit more detail of wavelength division multiplexing. It multiplexes a number of optical carrier signals, so that relate to light, specific to light, onto a single optical fiber by using different wavelengths, that is different colors of laser light. Obviously this enables a better utilization of the resource, so it enables bidirectional communication as well as multiplication of capacity. So in that concept, because it is wavelength division multiplexing, it is quite similar to the FDM we know, the conventional FDM, but we have to remember that WDM is done in the infrared portion of the electromagnetic spectrum instead of radio frequencies. तो जो काम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज में FDM कर रही है, वही काम फाइबर के अंदर के लिए लाइट की रेंज में
ऑप्टिक्स की रेंज में वही काम WDM कर रही है इन द इंफ्रारेड पोर्शन. सो दैट इज़ सिमिलरिटी. इसकी दो मेन टाइप्स हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, डेंस और कोर्स. जैसा कि इस फिगर में बताने की कोशिश की गई है, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग is for long transmissions. So as you can see, it is concentrated into a smaller area of the available light spectrum. So it is narrower, but it is used for longer transmissions. Probably more powerful transmissions happen in DWDM, whereas in CWDM, where C stands for coarse, the spreading is greater. So a lot of wavelengths are involved, as you can see, and they are transmitted at rather lower power by comparison, and they are non-amplifiable, and that is why their only application is for short range communication. So these are the two major categories of WDM, wavelength division multiplexing, and this type of multiplexing is unique only to fiber optics, whereas the previous two techniques are used in wireless communication. And the next is code division multiplexing, CDM. And in code division multiplexing, once again, as Clar has beautifully explained with using the same axes, the frequency and the time axes. And if you notice, multiple signals are using the whole of band for the whole of time. So with a little bit of separation or guard bands and guard times, you can see that, for example, signal 1 is also using spectrum in slot 1. It is also using a portion of spectrum in time slot 2, and it is also using a portion of spectrum in slot 3, and that applies to all the signals which are being multiplexed. So virtually all of them are available in all the time slots. They have all the time slots available, and they also have the chunks of the bandwidth available to them, but their sequencing is changing. As you can see, the signal 1 here was using band 1 slot 1. In slot 1 it was using band 1, in slot 2 it's using band 3, in slot 3 it's using band 1, and so on. So every signal is using a different band in a different time slot. So this is basically the concept of frequency hopping. So signal 1 is, for example, hopping between band 1, band 3, band 1. If you look at signal 2, it is hopping between band 2, band 1, band 2. So similarly, signal 3 is hopping between band 3, band 2, band 3. So they are hopping, they are changing frequencies in every time slot, and this hopping sequence is pseudo random. It's rather random, so it is hard to interpret, it is hard to decipher. Okay, so it is very secure, it adds to the security, plus it is more efficient utilization of resource than TDM or FDM. And this is all this hopping is happening through a code or a sequence. That is why the name is code division multiplexing. So that is probably the best use of the communication resources of frequency and time. So this is a rather simplistic view of CDM, but it is good enough to illustrate basically what is going on. So both are being used by every signal. That is the point. If we look at it from another way, so for example, if frequency and time are your axes, so in FDMA the frequency or the available bandwidth is divided between users, and they have the chunk available for the whole of time. That is what happens in FDMA. While in TDMA they have the channel, the full bandwidth available, the full frequency or bandwidth available for a certain amount of time, and then another signal will have its time slot, and then another signal, and when all of them they have completed their turn, so फिर दोबारा पहले वाले का number आ जाएगा, and so on. So here they are distributing the available bandwidth between themselves. Here they are utilizing the whole bandwidth, but
for little time, everybody. But if you look at CDMA here, it looks like that everybody is utilizing the whole of frequency for the whole of time, and still the communication is successful. I mean, it's like everybody is using the same frequency band for the same time, but they're not interfering with each other. So that's the beauty of CDMA, or code division multiple access. So how does it happen? How do we relate? So there is an analogy. So an analogy to the problem of multiple access is a room, let's say your classroom, which can be considered as a channel in which people wish to talk to each other simultaneously. So there are many people who want to talk to each other. I know you do that a lot of time in the class, but let's say to avoid confusion, what are the choices? The people could take turns to speak. बारी बारी बोल रहे हैं सारे, पहले एक बोलता है, फिर उसकी बात ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरा बोलता है, फिर उसकी बात ख़त्म हो जाती है, फिर तीसरा बोलता है. So this is time division. We have distributed the conversations time wise. Or people can speak at different pitches or different frequencies. ठीक है, तो वो कुछ फ्रीक्वेंसीज ताकि आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकें, ट्रांसमीटर रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर सकें. ख़ास फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दूसरा किसी और फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर रहा है या किसी और पिच पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है. और दे कैन स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, विच इज़ कोड डिवीजन. तो दो बंदे बैठे हुए हैं आपस में परसों में बात कर रहे हैं, साथ वाले दो आपस में उर्दू में, साथ वाले पंजाबी में, साथ वाले इंग्लिश में, उस तरफ बलोची में, उस तरफ सिंधी में, एंड सो ऑन. कोई अरबी में बात कर रहा है. तो देर आर मल्टीपल कन्वर्सेशंस गोइंग ऑन विद इन द रूम और विद इन द चैनल, एंड देर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. हाँ, इसमें अब प्रिंसिपल क्या होगा? एक तो ये कि सबका कोड डिफरेंट है, और अज्यूमिंग कि जी एक कोड को दूसरा कोड इंटरफेयर नहीं कर रहा, उसने अपने टाइप का फ़िल्टर लगाया हुआ है अपने कोड के लिए. तो यानी कि उर्दू वाले जो आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने अरबी को, पश्तो को फ़िल्टर किया हुआ है, उस पर डोंट केयर लगाया हुआ है, वो उसे नहीं सुन रहे, वो सिर्फ अपने कोड को, अपनी वाली लैंग्वेज को सुन रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि ये जो आपस में कन्वर्सेशन है, ये लो पावर लेवल्स पे हो रही है. दैट्स हैपनिंग एट लो पावर लेवल्स, ताकि एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें. तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि CDMA में यूज़ होते हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में. सो CDMA is analogous to the last example, where people speaking the same language can understand each other, but other languages are perceived as noise and hence they are rejected. Similarly, in real life radio communications in CDMA, each group of user is given a shared code. There are many codes who will be occupying the same channel, but only users associated with a particular code can communicate. तो बाकी जो दूसरे कोड्स के सिग्नल्स होंगे या यूज़र्स होंगे, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, they will get rejected. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ CDMA. क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोड्स जनरेट होते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एंड यू नो वेरी वेल कि ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. दे हैव ज़ीरो कोरिलेशन विद ईच अदर. और ये जो कोड्स हैं, ये सूडो नॉइज़ होते हैं, इसीलिए इनको PN कोड्स कहा जाता है. PN स्टैंड फॉर सूडो नॉइज़ कोड. तो सूडो नॉइज़ एक तो ये कि रैंडम होते हैं, दूसरे कि नॉइज़ लाइक होते हैं, बिल्कुल लगता है कि नॉइज़ है, लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं ताकि एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें. तो दे आर बीइंग डन एट लो पावर लेवल्स. दे रिजेंबल नॉइज़, असल में नॉइज़ नहीं है, उसके पीछे एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, ज़ीरो कोरिलेशन. और रिसीवर जो है वो फिर क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन को यूज़ करके अपना जो कोड है उसे डिटरमिन करता है और बाकियों को रिजेक्ट कर देता है. ऑब्वियसली क्रॉस कोरिलेशन जिस कोड को वो यूज़ कर रहा है उस कोड के साथ ज़्यादा होगी, उस कोड के सिग्नल के साथ, और बाकी सिग्नल्स के साथ कम होगी. CDMA की दो मेन टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम है और एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ CDMA, डायरेक्ट सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग. दोनों मुख्तलिफ़ तरीके हैं स्पेक्ट्रम को स्प्रेड करने के और पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज करने के, लेकिन बहरहाल मेन कॉन्सेप्ट वही है, मेन पॉइंट्स जो कि यहाँ ऊपर डिस्कस हो चुके हैं. सो दिस इज़ एंड टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी हॉपिंग CDMA technique. So you have a PN code generator, a pseudo noise code generator, which generates a code, and using that code frequency hopping
मॉड्यूल इज़ यूज्ड टू हॉप द फ्रीक्वेंसीज़, और वो जो कैरियर की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हॉप होती हैं और फिर वो कैरियर जो है मॉडुलेट हो रहा है। तो हर बार एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कैरियर मॉडुलेट हो रहा है और एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो जैसा आपने कुछ स्लाइड्स पहले देखा कि एक ही यूज़र जो है मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ पे हॉप करता है, तो वही उसी यूज़र का सिग्नल है लेकिन मुख्तलिफ़ टाइम स्लॉट्स में मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ पे हॉप कर रहा है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। उसके पीछे हार्डवेयर कुछ इस किस्म का होता है जैसा इस फिगर में नज़र आ रहा है। देयर आर ऑल्सो अदर मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स। वन इज़ स्पेस डिवीजन। स्पेस डिवीजन इट एक्सप्लॉइट्स द स्पाशियल सेपरेशन ऑफ अर्थ स्टेशंस। चूँकि उसमें स्पेस की सेपरेशन मौजूद है इन अर्थ स्टेशंस में, एक अर्थ स्टेशन किसी और जगह किसी और शहर में है, दूसरा किसी और जगह किसी और शहर में है, तो उनकी सेपरेशन का फ़ायदा उठाता है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और यहाँ पे स्पॉट बीम एंटेनास यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज टू सेपरेट द रेडियो सिग्नल्स बाय पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एक्चुअली वहाँ सेटेलाइट में ये प्रोविज़न है कि उसके पास स्पॉट बीम एंटेनास हैं और वो अपने स्पेसिफिक अर्थ स्टेशन की तरफ पॉइंट करके या स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करके सिग्नल्स या तो ट्रांसमिट कर रहा है या तो रिसीव कर रहा है, एंड दैट अलाउज इट टू यूज़ द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ट्रांसमिशंस बाय यूजिंग स्पॉट बीम एंटेनास। सो यू कैन इमेजिन कि एक ही वक्त में ऊपर सैटेलाइट से मुख्तलिफ स्टेशंस के साथ कम्युनिकेशन हो रही है ऑन द सेम फ्रीक्वेंसीज, लेकिन वो इतनी नैरो फोकस बीम्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो इसी तरह वी हैव पोलराइजेशन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीपल एक्सेस। उसमें ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को यूज़ किया जा रहा है टू सेपरेट द सिग्नल्स। अब इन दो पोलराइजेशन में चूँकि 90 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो वंस अगेन दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दिस अलाउज द रीयूज़ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों जो हैं स्पेस और पोलराइजेशन, दे अलाउ द रीयूज़ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। तो आइडिया कुछ ऐसा इस फिगर से आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ SDMA स्पेस डिवीजन। तो एज़ यू कैन सी वी हैव मल्टीपल बीम फ्रीक्वेंसी रीयूज़। तो टारगेटेड बीम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की रेंज में नहीं आ रही, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रही, एंड बेसिकली दे कैन बी हैपनिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसीज। इसी तरह अगर पोलराइजेशन की बात करें तो इट इज़ कम्युनिकेटिंग ओवर द सेम जोग्राफिकल एरिया बट विद डिफरेंट पोलराइजेशंस, सेम फ्रीक्वेंसीज बट डिफरेंट पोलराइजेशंस। तो डिफरेंट पोलराइजेशंस के लिए हमारे पास क्रॉस पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए ऊपर एंटेनास के, एंड व्हेन वी हैव देम देन दिस फीचर कैन बी यूज्ड। तो एज़ यू कैन सी हमारे पास ये इन फीचर्स की वजह से, स्पाशियल और पोलराइजेशन रीयूज़ की वजह से वी कैन हैव अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो ये इंटेलसेट 4A सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, कॉमस्टार ये यूज़ कर रहा है, इंटेलसेट 5 जो है वो दोनों टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। तो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। सेलुलर कम्युनिकेशन में भी मल्टीप्लेक्सिंग के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। 1G वॉज बेस्ड ऑन FDMA जो एनालॉग था एम्स। फिर जब 2G 2.5G आया तो इट इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन TDMA और कुछ उसमें स्टैंडर्ड्स ऐसे थे जो कि CDMA यूज़ कर रहे थे। 3G 4G और 5G ये प्रीडोमिनेंटली CDMA की टेक्निक्स हैं। कुछ एडवांसमेंट आती जा रही है लेकिन इन प्रिंसिपल ये सारे CDMA बेस्ड हैं। जैसे आपको पिछली स्लाइड से आइडिया हो गया कि CDMA इज़ मोर एफिशिएंट देन TDMA और FDMA। तो इस वक्त CDMA इज़ द प्रेजेंट एंड CDMA सीम्स टू बी द फ्यूचर एज फार एज मल्टीप्लेक्सिंग इज़ कंसर्न। हाँ, उसके फिर वेरिएंट्स और कॉम्प्लिकेशंस और आ रही हैं, एडवांस वर्जन्स, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, दैट इज़ CDMA। In the end, I would like to mention a few notes on OFDM. So OFDM stands for Orthogonal Frequency Division Multiplexing. It is being used in very modern wireless standards like Wi-Fi 802.11 AC, in 4G and 5G, in WiMAX and its satellite communication.
and basically it is a variant of frequency division multiplexing. So in FDM, if you remember, the available bandwidth was split between the signals or the users. Everyone was allotted a chunk, and there was a guard band between every user's individual bandwidth. So imagine that you don't have the guard bands, so you push the individual bandwidths or the individual signals closer. So you end the guard bands, get rid of the guard bands, so more spectrum becomes available. In fact, you compress them or you bring them closer in such a way that now they are overlapping with each other. So now you are creating more space to accommodate more users. Obviously this will lead to better use of available spectrum, and more users and signals can be accommodated. So that is what will naturally happen. But the question is that how do they don't interfere with each other if they are using the same band? So the answer to this question is orthogonality. So basically they are made to come closer, they are made to occupy the same band, but they are made orthogonal to each other. So in such a manner that every signal is sort of converted to a sink, and those sinks are overlapping, but the unique thing is that when one sink has its peak, the other sinks are having their zero crossing. So at all those instants when one signal, the sink of one signal is having its peak values, at that time all the other sinks, they are zero. So at that time they are not interfering with the selected signal. So whichever signal you want to use, if you go to the location when it is having its peak value, the others will be zero. I have also given you the link of a YouTube video, very small video, which explains this concept figuratively. And because they are orthogonal, they are not interfering with each other, the receiver is able to separate them based on the same principle of orthogonality. All it has to do is to apply the correlation or cross correlation, and that is how it can recover. So this is the main background to OFDM. Thank you. So that's the end of this week's lecture, and make sure you watch the links that I have shared with you regarding explanation on certain topics. Thank you.